हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनु वर्किंग एज अ साइकियाट्रिस्ट इन तुलसी हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे। बहुत बार हम सबका एक ये थॉट प्रोसेस होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा डायरेक्टली इंडिकेट्स बुलिंग इन द स्कूल और फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम एनी रिलेटिव और एनी अदर पर्सन, बट इट्स नॉट जस्ट दीज थ्री थिंग्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड अब्यूज़ के अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ केयर प्रोवाइडर ऑफ द चाइल्ड, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये 3 चीज़ें बताई, दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। इसके अलावा किसी तरीके का पैंडमिक जैसे कोविड was one of the issues that came up and we all dealt with. So that also can lead to childhood trauma because उनकी जो एक नॉर्मल रूटीन था वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया था, उनकी सोशल लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुई थी। Times when the child sees domestic violence in the house from between the parents or between any other adult in the family, that can also lead to childhood trauma. बहुत बार माइग्रेशंस ऑफ पेरेंट्स, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स दे वर्क इन मिलिट्री और ट्रांसफरेबल जॉब्स, तो बहुत फ्रिक्वेंटली दे कीप ऑन माइग्रेटिंग, दैट ऑल्सो कैन लीड टू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन अ चाइल्ड्स ब्रेन बिकॉज उन्हें they have to adjust to the new environment, whether schools, new friends, their constant changing behaviors, so that can also impact them. Other than these things, some wars that are happening, some these disasters that may happen, all these things, they all create a lot of impact on a child, which actually can become child trauma. Now, as we saw that बहुत सारी इनमें से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। So, how do we deal in those situations? अब हर किसी सिचुएशन के अंदर वी कैन नॉट जस्ट स्टॉप द थिंग फ्रॉम हैपनिंग, राइट? वी कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टॉप द डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग, वी कैन नॉट गो एंड स्टॉप द वॉर फ्रॉम हैपनिंग। उस समय में बच्चे को कैसे डील करना है, किस तरीके से हमें डील करना है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बिफोर दैट वी नीड टू नो दैट अगर बच्चा किसी तरीके के अब्यूज़ या ट्रॉमा से गुजर रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर हम डिफरेंट एज ग्रुप की बात करें, फॉर अ एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड और अ प्री स्कूल चाइल्ड, यूजुअली उनका खाना बहुत अफेक्ट हो जाता है। दे आर सीन टू बी क्राइंग मोर, दे आर सीन टू बी इन्वॉल्व्ड इन लेस विद द केयर गिवर्स। When it comes to this middle school kids and the primary school kids, हम देखते हैं कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन होने लगती हैं। दे हैव दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम कि मेरी वजह से शायद हो सकता है ऐसा हो रहा हो, या मैंने कुछ गलत बिहेवियर किया, या आई एम अ बैड चाइल्ड और प्रोबेबली आई बिहेव्ड इन अ बैड वे बिकॉज ऑफ विच दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद माई पेरेंट्स अराउंड मी और विद माई लव्ड वंस, और ये सारी चीज़ें, ये सारा मेरी गलती है। सो व्हेन इट कम्स टू अडोलेसेंट एज ग्रुप, उसमें बहुत बार दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट मे बी प्रेजेंट, अलॉन्ग विद दैट लोनलीनेस और डिप्रेस्ड मूड काफ़ी सिग्निफिकेंटली देखा जाता है। इनके सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के पैटर्न्स आने लगते हैं, या फिर नए नए सब्सटेंसेस ट्राई करते हैं। अकेडमिकली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ जाते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू माइट बी ऑब्जर्विंग इन योर चाइल्ड, और if you have a child around you who might be undergoing some or other kind of childhood trauma. It has been seen that unfortunately 3/4 of the kids up to the age of 16, they undergo some or the other kind of childhood abuse or trauma. So it's not an uncommon thing, but again, it's not necessary that every child who is undergoing some childhood trauma or abuse will require help. बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली जिन्हें शायद एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। सो एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट और एज अ केयर गिवर, what you should do in these situations when you realize that probably your child is undergoing some or the other trauma.
first and foremost thing is to be supportive. To have a very strong support system is something that is required for a child. Do not negate how they are feeling. Always validate their feelings. Ask them how they are feeling. किस तरीके के इमोशंस उन्हें आ रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, and what is making them feel the way they are feeling right now. If they say that they're feeling sad or they're feeling like crying, don't tell them not to feel that. Let them feel it, but be present in that moment so that they feel safe being able to express those emotions in front of a caregiver. So being present is very important. Other than that, listen to them very carefully. Try to be constantly present around them. Try to provide them with other activities which they may enjoy indulging in, like some sort of hobbies or some sort of games sort of activity जो उनको पसंद है करना. Always keep a check on the kind of peer group that your child is having, because for a child of any age, the peer group is something which is very important, which is very influential for the child's brain, for a child's activities. So have a good contact with the peer and their parents as well, so that you can recognize कि हाँ कुछ problems हो रही हैं, या फिर this is the time when I probably need to intervene, या इस समय मुझे शायद हो सकता है किसी एक mental health care professional की ज़रूरत पड़े. So these things are very crucial when it comes to childhood trauma. Again, in the end, I would say one thing only. Whenever your child, or when you think that your child is maybe undergoing some or the other trauma, be patient with them. Be actively and passively listening to them. Be calm, composed. Let them express the way they want to express. Validate their feelings. And do not shrug their feelings away, because anything and everything that they are feeling in the moment, that is very important. You might feel that शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, या फिर इस छोटी सी चीज़ में, इस छोटी सी सिचुएशन में इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू डू इट, प्रोबेबली बच्चा अगली बार आपको शायद आके बताएगा नहीं कुछ भी. So accept whatever they are telling, validate it, and help them supportively in that situation. I hope this video helps you understand a little bit about child trauma and how you can effectively deal in such situations. But as and when required, if you think that it is not being manageable at home with you, with your help, or with some other caregiver's help, always reach out to a mental health care professional in those situations, and we'll be happy to help you. Thank you.